1st February 2023, the Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the last full union budget before 2024 elections. India's most awaited financial event comes in the midst of global slowdown, inflation, liquidity tightening, geopolitical tensions, and re-emergence of COVID-19. Will India look to fire up its manufacturing? Will India build a moat against global uncertainties? What will the budget have for the middle class? Watch the complete coverage of Budget 2023. Real-time analysis, expert takes all day on Moneycontrol. Log on to www.moneycontrol.com for more. Good afternoon and everyone, welcome back to Moneycontrol live stream. You're watching Closing Bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Well, the bulls did manage to hold on to early gains, and we have both the PSE Sensex and NSE Nifty ending in the green today. Mid-cap stocks also managed to make a good comeback after underperforming on Friday. Well, barring metals and realty, almost all the other sectors ended in the green today. The India Volatility Index, also known as the Fear Index, slipped further today and down by 1.2% to 13.6%. So a lower VIX reading means that the market is more positive in its outlook. Among the prominent gainers today, we had Sun Pharma, Hindustan Lever, Tech Mahindra, Eicher Motors, and TCS. While among the prominent losers of the day, UltraTech, that was a big loser. Down by almost 5%. The company had reported its third quarter numbers over the weekend. A mixed set of results. The realizations, that was the major disappointment according to most analysts. So one will have to wait and see whether the coming quarters indicate any improvement in trend of both the prices as well as realizations. Other losers included Grasim, JSW Steel and Tata Steel. एब्सोल्युटली सेंटो और अल्ट्राटेक की बात करें तो आज सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल भी था. देखिए, डिमांड एक चैलेंज नहीं है, लेकिन जो कॉस्ट और जो रियलाइजेशंस के बारे में कंपनी ने कहा, शायद एनालिस्ट लोगों को वो पसंद नहीं आया. स्टॉक बिल्कुल डेज लो पे 5% नीचे बंद हुआ. ऑब्वियसली सीमेंट की बात करें तो डिमांड कोई चैलेंज नहीं होती है इतनी, जितनी कॉस्ट कंट्रोल्स और रियलाइजेशंस और वॉल्यूम ये चीज़ें मैटर करती हैं. तो इसीलिए शायद स्टॉक प्रेशर में था. सैंटो, दूसरा स्टॉक आज येस बैंक. बहुत सारे रिटेल निवेशकों की आज हवा निकली होगी, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड आपको रिटेल शेयर होल्डिंग दिखेगी. एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थे. दो चीज़ें हुई. सबसे पहले तो जो रिजल्ट्स आए, सिक्वेंशियली इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स गिरे और नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब सब बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज कंपनीज बेटर रिजल्ट कर रही हैं, यहाँ इन्होंने डिक्लाइन दिखाया. तो इतना कोई खास रिजल्ट नहीं था. दूसरी बात, जो 81 बॉन्ड्स हैं, जो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल के बॉन्ड्स हैं, यहाँ हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक झटका लगा. आरबीआई की जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन स्कीम थी येस बैंक को लेके, और हाईकोर्ट ने टेक्निकलिटी पे ये 81 बॉन्ड्स जो 8,500 करोड़ रुपए येस बैंक राइट ऑफ कर रहा था, इस पे रोक लगा दी. ऑब्वियसली अगर हाईकोर्ट रूलिंग ओवरटर्न कर देती है इस पर्टिकुलर रिकॉन्स्टिट्यूशन स्कीम का, तो येस बैंक को 8,500 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस लौटाने पड़ेंगे. उतने तो पैसे शायद येस बैंक के पास है नहीं, सबसे पहली बात. और अब ये ओवरहैंग बन चुका है, क्योंकि शायद अब लग रहा है कि आरबीआई, येस बैंक और गवर्नमेंट तीनों ही पार्टीज जोर लगाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, जहां ऑब्वियसली एक फेवरेबल टर्म सीक करेंगे इस पूरे मामले में. लेकिन हाल फिलहाल तो बॉम्बे हाई कोर्ट का झटका येस बैंक को लगा, और शायद इसीलिए स्टॉक बड़े वॉल्यूम्स के साथ आज 10% तक नीचे चला गया. Also, Yatin, now that we are closer to the March deadline, there was a 3-year lock-in period. Yes. Investors with just about 100 shares were allowed to sell their shares during the big round of sell-off that we had seen 3 years back, when the bank was almost on the edge. And that extra supply now, which had been blocked so far, that will also come in, and which is why probably you may not see the stock making any big gains in the near term. And well, with that, let's move on to the stocks on our watch list this afternoon. Atul Limited. Now, this is a stock which was among the prominent losers today. The stock has been under pressure for quite some time now. Now, according to Moneycontrol Pro,
exports of chemicals have shown a clear decline, and right now there seems to be a clear distinction in market preference for chemical stocks which are catering to the domestic market as well as those which are catering to the international markets. And Atul Limited, which earns almost 45% of its sales from the global markets right now, is not in favor with the markets for two reasons. One is that because of the weakness in advanced economies like US and Europe, when the contracts are renegotiated, they are most likely to come in at a lower rates. That's concern number one. The second concern is that Atul Limited is still sitting on a fair bit of high cost inventory, and this will take at least another 2-3 quarters to be pushed out, which means that there could be some bit of margin compressions as well, and the valuations too are not looking very cheap at this point in time. Absolutely. और बात ये करते हैं कि जो केमिकल स्पेस है सैंटो, यहाँ हमने वैल्यूएशंस भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखे हैं. ऑब्वियसली चाइना, यूरोप, यूएस, ये जो मेजर इकोनॉमीज़ है जहाँ से केमिकल्स की डिमांड आती है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड आती है, शायद वो स्लो हो चली है. और आपके क्लाइंट्स कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, प्राइसिंग तो ग्लोबली होता है सैंटो, क्योंकि ग्लोबल प्राइसिंग में आपने थोड़ा बहुत अनफेवर देखा है. शायद ओवरऑल बेसिस पे थोड़े आगे चलते हुए आउटलुक में धीमापन आ सकता है. शायद बाजार ये चीज़ें मार्क कर रहा है. ये स्टॉक तो सैंटो, अब मैंने सोचा है ना कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव हम देना शुरू करें बजट के ऊपर, क्योंकि हार्डली 7-8 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं बजट को, और लोगों को जानना होता है कि बजट के पहले पहले क्या सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है सेक्टर, स्टॉक्स, और क्या हो सकता है बजट में. तो आज बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स पे, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये फुल फाइनल बजट आपको दिखेगा इस टर्म का मोदी गवर्नमेंट का. अगले बजट तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा क्योंकि जनरल इलेक्शंस की डेट नज़दीक आ जाएगी. लेकिन इस बजट की बात करें तो शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, ये सब सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दे. और स्पेसिफिकली हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो एल&टी, थर्मैक्स, ये सब स्टॉक्स नए नए हाइज आपको बनाते हुए दिखे थे. थोड़े बहुत यहाँ आपको मौके मिलेंगे खरीदारी के. और एक्सपर्ट्स की अगर आप माने तो कैपिटल गुड्स सेक्टर, और अगर हम इंफ्रा की बात करें तो गवर्नमेंट का खास फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन 20% से बढ़ाने के लिए वर्सेस लास्ट ईयर. कैप गुड्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए पीएलआई स्कीम आ सकती है, ज़्यादा इंसेंटिव्स आ सकते हैं. ऑलरेडी एक ग्रीन हाइड्रोजन पे सरकार ने पॉलिसी निकाली है जहां लगभग 20,000 करोड़ के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, लेकिन शायद इंडस्ट्री को लगता है और भी ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट इस बजट में कर सकती है. दूसरी बात, रेलवे और डिफेंस, ये दो सेक्टर्स हैं जो शायद कैपिटल गुड्स की ग्रोथ को रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे वैसे वैसे कैप गुड्स की मांग बढ़ेगी. रेलवेज लगभग लास्ट ईयर के मुकाबले 20% का एलोकेशन बढ़ना चाहिए. सिमिलरली 15 से 20% का आपको डिफेंस में सैंटो जो एलोकेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा. और इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स की बात करें, जो पीएसयूज केपेक्स करती हैं, ऑलरेडी केपेक्स मोड में है पीएसयूज काफ़ी सारी, तो यहाँ भी आपको लगभग 8-10% तक का इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है बजट में. तो नजरें रखिए एल&टी, थर्मैक्स जैसे स्टॉक्स पे. बहुत सारे स्टॉक्स आपको इंफ्रा और कैपिटल गुड्स में मिलेंगे. अपनी रिसर्च कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी शायद इस सेक्टर के लिए बजट में आ सकती है. Yes, a small concern there, Yatin, because some of the sectors that you mentioned, for instance, defense and rail, these stocks have already seen a very good run up over the last 6 to 8 months. They've done very well. Now, the question here is how much of the budget expectations would already be have been priced in. So that is something one needs to watch out for. So even if the announcements were to be positive, I'm not sure how much of an upside that could lead to. Just because of the fact that a lot of build up has already happened, and the traders who have gotten early would want to book some profits once the announcements come in. And the last stock on my watch list this afternoon is Havells India. The company had recently reported its third quarter numbers. Now, mixed set of results there. On the B2B front, in the B2B business, the company is doing pretty well. But at the same time, it's B2C or business to consumer. That is where there is a bit of slack, mainly because of inflation that is hurting demand at this point in time. Its cables and wires business did well. Lloyd's Durables also reported strong numbers, mainly coming off a low base, but still there are some bit of concerns, mainly for Lloyd's, where it's still sitting on a lot of high cost inventory, and these will need to be pushed out. At the same time, price hikes is not all that easy, given that the market is appearing to be very competitive at this point in time.
In the consumer lighting business, the growth was just about flattish, and in the fans segment, they had to destock a lot of the high-end products, mainly because of the change in rules by the Bureau of Energy Efficiencies. But according to Moneycontrol Pro, the biggest problem is that stock is fairly expensive at roughly about 62 times 1 year forward, and the macro outlook, although the third quarter numbers were quite good, you saw margin improvement, a significant margin improvement quarter on quarter. Still the macro outlook at this point in time looks a little iffy, and given that valuations are so expensive, 62 times 1 year forward earnings, big upsides in the stock look unlikely. The stock although did pretty well today, and that largely is ascribed to short covering of positions in the future segment. हेवल्स के बारे में बात करूंगा। जो लॉयड की आपने बात की शायद वो फेयर है, क्योंकि मुझे लगता है 20 करोड़ का लास्ट ईयर लॉस था लॉयड में, वो ये टाइम 50-60 करोड़ के आसपास कुछ हो गया। लॉयड कंसिस्टेंटली थोड़े बहुत लॉसेस कर रहा है, लेकिन सैंटो कमोडिटी का एक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो कमोडिटी प्राइसेस थे, लास्ट क्वार्टर जो कमोडिटी प्राइस थे, वहाँ से चीज़ें काफ़ी नीचे आ रही हैं। तो शायद हेवल्स को थोड़ा बहुत बेनिफिट मार्जिन की तरफ से वहाँ एक टेलविंड आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऑब्वियसली अगर बजट में कोई हाउसिंग रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट आ जाए, हाउसिंग लोन्स को जो लिमिट है अभी एटीसी के एग्जेम्पशन में, उसको अगर बढ़ाया जाए, हाउसिंग जो आप देख रहे हैं उसको इन जनरली काफ़ी सारे लो कॉस्ट हाउसिंग सेगमेंट्स में अगर डिवाइड कर दें, और वहाँ आपको कुछ गवर्नमेंट का बोनस इन टर्म्स ऑफ जो होम बायर्स हैं उनके लिए कुछ सरकार करे, तो ये एक सेक्टर तो थोड़ा बहुत फोकस में रह भी सकता है। And with that, there's a wrap on this episode of Closing Bell. Thank you for watching and बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, और बजट के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ों के साथ मैं और सेंटो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। We'll be back again at 9 a.m. tomorrow morning. In the meantime, for all news, views and analysis, stay logged on to moneycontrol.com. 1st February 2023, the Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the last full union budget before 2024 elections. India's most awaited financial event comes in the midst of global slowdown, inflation, liquidity tightening, geopolitical tensions, and re-emergence of COVID-19. Will India look to fire up its manufacturing? Will India build a moat against global uncertainties? What will the budget have for the middle class? Watch the complete coverage of Budget 2023. Real-time analysis, expert takes all day on Moneycontrol. Log on to www.moneycontrol.com for more.